Let's start the session, and formally I welcome you all again. Thank you very much. And the subject of today's discussion is very important subject. So the subject is there is a common feeling that morality is at its lowest point in society. But question again is there how to create the moralists? That is the main discussion of today's session. हिंदी में कहें तो आज आम धारणा है कि समाज में नैतिकता अपने सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन प्रश्न है कि नैतिकवादी कैसे पैदा करें या कैसे बनाएं. That is the subject of discussion today, and I hope we all will take it. If you allow me, then I'll start with the notion that in almost all walks of present day life, the dark shadows of immorality are fast taking definite shape. Rather, it has taken a definite shape and hampering human progress in all walks of life. It requires a very strong moral force to wipe out this filth of immorality. One cannot expect this moral force from government power functioning within a democratic structure. We must expect it from the non-political side. The government, be it the fascist, imperialist, republican, dictatorial, bureaucratic, or democratic, is sure to become tyrannical if there is no moral force to check the capricious activities of the leaders of the party or in power. And morality is the fundamental factor of success of democracy that we all know. And in absence of morality, people sell their votes, which is very obvious things we hear. And there are few countries in the world where votes are being sold and purchased. Even in news, usually we hear that democratically chosen candidates are also being purchased like IPL sport persons. So can we call it democracy? Is it not affairs? Hence, until 51%, the propounder of PROUT says that unless there is a 51% population adherent strictly to the principle of morality, there is no chance of successful democracy. Where immoral persons are in the majority, the leaders will necessarily be from and among them. So how to make moralists? That is the debate for the today. So thank you very much, and I request you all to participate wholeheartedly, and let us find the way and means to make justice to this discussion today. Thank you. And may I request Haran and Dada directly to start because people take time. So thank you, Dada. Namaskar. Thank you, Dada. As we know, the topic is how to make people moral. The basic structure of a human personality is formed during childhood, and by the time he or she becomes a teenager, many of the moral parameters get crystallized in their minds. Now, at this stage, there are two institutions which play a major role. That is, first is family, second is school. I'm not talking of the college morality, because by that time, the college boys and girls have a fixed set of notions, prejudices, if any, philosophy, if any, dreams, if any. So no point in like breaking stone. So best is when it is in the form of a sand, we can do something about it. Now, let us survey the whole area, as Baba has pointed out. A very important field of biopsychology, another emerging field of biosociology, another neurochemistry, and the great endocrinology, which has already been set up in many medical colleges. So if we take all these four disciplines together, Baba has shed tremendous light in these areas in different discourses. I'm trying to integrate some of these thoughts, synthesize them, and put across. Now, as we all know, it is clearly stated in the chapter of on biopsychology and this plexus, role of plexus and hormones. Now, let us
first appreciate that the hormonal development of a child directly impact the psychic growth of a child. Baba has said, and it has been proved by scientific experiments and scientific evidence. I think there is some noise which is disturbing the whole platform. Yeah, I would request to mute that his phone or laptop, whatever, so that acoustic disturbance is not there, so that others can speak coherently. Thank you. So initially, as we know, when a child is born, oxytocin is released in the mother's body. Oxytocin is the hormone which creates a bonding with the child, which creates a love for the child, and child also responds to the mother responses. So initially, and let me emphasize, in the pre-linguistic stage, as psychologists say, that is preschool stage, pre-linguistic, when the child has not yet learned the language, cannot express himself or herself properly, because the linguistic resources are not with the child. In the pre-linguistic stage, it is primarily the role of the mother to take care of the morality of the child. Now, somebody may always ask, why, how a 3-year boy or girl can be taught morality? Let me clarify. The mother, by the facial expressions, by the gestures, by the play rituals, teaches many things like obedience, respect, fear. All these emotions, moral emotions, are taught by the mother when the child grows and is in the pre-linguistic stage, when the linguistic resources are not available with the child to express himself or herself. Now, what happens? Why the focus is there on primary schools? Because once the boy or girl is 13, in hot countries where climate is hot like India, or in cold countries where the child has attained the age of 15, as clearly stated in the chapter on biopsychology, many glands, many hormones start their work. Now, there is a close relationship, as we all know, between hormonal secretions and psychic expression. As we all know, many psychic propensities are dependent on the secretion of hormones, over secretion, under secretion, normal secretion. Now 13 is one point from which is the teenage point, as we say, from 13 to 19. It is the teenage of a child, boy or girl, whatever. So from the age of 13, as it has been said, certain glands become very active. For example, the sex glands start functioning. Before that, the pituitary already starts functioning from the childhood, but pituitary starts its full operation from the age of 13. Now, pituitary gland has a number of biological functions, psychological functions. Let me take a minute. For example, biologically, it is called the growth hormone. It's very important. It is called GH, growth hormone. It regulates blood pressure. It helps in pregnancy and childbirth, milk production, thyroid gland it regulates. Then it changes food into energy. So for metabolic conversion of food into energy, this pituitary gland plays a role. Water balance, osmolarity regulation, temperature regulation of the body, and pain relief. So these are the biological functions of pituitary gland when it starts secreting its hormone. Now, there are some major psychological dimensions of the secretion of pituitary gland. First is, it is called a stress mediator. Now, at the age of 13, why the parents, all of us keep talking to parents, we have been parents, they say children are not listening to us. Boys and girls are there. Why? Because the stress level is going up, though there is a gland which is working stress mediator, but there are many things which have come up on the psychic level of the child. Thirst for spirituality, love for the earth. Now, this is very important.
when sex glands start working from functioning from the age of 13 or 15, hot/cold countries, these glands create a love for the earth. They further create rationality in a human being. Now these glands, testes, ovaries, and pituitary, they together play a major role in the psychic transformation of the individual. So if by the age of 13, we are not able to give proper moral expressions, proper moral education to the child, after 13, from 13 onwards, the child starts rationalizing things. Why my father is telling lies to the mother? Why my mother is concealing this thing to me? So these questions start coming. And with the process of rationalization, as we have seen, the child starts developing a love for the earth, which means communication, social media, YouTube. So what happened? Diversionary forces start working on the psyche. These diversionary forces are because of the innate urge to love the earth, to know the people. Communication demands are going along with the growth of the hormones. So this is a point which is very critical for the child to be educated. Now, the role of the family, let us slightly discuss that. What is the role of the family in that? Mother has a major role. I'll give one or two examples. In the pre-linguistic stage, when a mother says no to a child through some finger gesture, don't do it. It is a type of moral instruction and a part of moral education. Similarly, when the mother takes that toy from the boy or girl and gives back the toy, she's teaching excitement, delight, and amusement. That when you get something, you are delighted, excited, amused, and when the thing is taken away, you are sad, dejected. The child may start weeping, may start crying or shouting. Similarly, another example I'll give: when the child kicks the mother exaggerates the expression of pain. What does she want to convey to the child? Okay, look, if you are trying to hurt somebody, the person will suffer pain. Now, this is again teaching common sense morality to the child. Right. So mother plays a major role in the pre-linguistic stage and also in the post-linguistic stage. Yes, time is running out, so I'll just... Dada, you are welcome, Dada. And next time you come, please. Hold okay. Okay, I'll hold myself. One message is already through. That message is clear. Very nice, very nice. That the mother has to teach the child morality in very childhood. She does naturally, pre-linguistic stage. That point is very clear. And also the point is that morality of a citizen depends on parental, how the parents behave with them. These 2 points are very clear. Next, please. And beautifully, Dada has touched also the best. Yes. Point I'll briefly, if I'm permitted. Yes. The role of schools. That will come. Yeah. Sure. Okay. So now, once the parent moves out of the school, I had a detailed analysis of what happens in parents-teachers meetings. Now, in the best schools of the country, like Delhi Public School, private school, I'm talking about private schools. So what happens? I've analyzed the whole thing. Basic focus is on academic growth of the child. No counselors, no psychic counseling is done to the child before examination. No psychologist, as Baba has said, the role of a psychologist and sociologist is very important for the development of the child at every stage of the planning, individual and social planning. Now, in what happens in PTM, the whole focus is on complaints, counter complaints, redressal of child's grievance. So the teacher is mostly at the receiving end. The parents keep on talking, and teachers give some advisory. But there is little focus or almost nil focus on extracurricular activities. For example, a boy or girl is doing very well in sports. He or she does not get appreciated in the PTM. Only discuss things are like mathematics, Bhagol, all these marks are not coming. Very academic, academic. And what do parents do? They complain about the boy is not listening to me, the girl is spending time on social media, YouTube, not adequately giving time. What is happening? The focus of the schools is on more and more
admissions, better reputation, better fees collection, profit maximization. Right. Now this commercial attitude of schools is shifting the focus from extra academic activities which matter in the growth of personality. For example, emotions have to play a major role in the growth of personality. We talk only about mathematics and physics. Mathematics and physics do not help a person in the long run. They may help in getting good marks. So schools also have a bias, commercial bias. Parents do not have time. Now again, the role of family comes. If your schools do not have time, what will the teacher say? They will normally say, look, the boy spends the girl spends 5-6 hours in the school. 18 hours he or she is spending with you. Is it not your responsibility? The parents will say, I'm a businessman, I don't have time. I'm a government servant, sorry, I don't have time. Nobody has time for the boy or girl. His or her moral development is taking place by default. In the family, nobody has time. In the school, nobody has time. Only time there is for physics, mathematics, YouTube, and social media. So if this is the situation of the day, this is the ecology that we are building up in families, and this is the ecology and sociology of schools. That God forbid, if you try to inculcate moral values when the boy is graduating, he has already a philosophy of his own, whether it is capitalist, proutist, or something else. No point in, teaching a boy who is already 20, 22. Yeah. I mean, the impressionable age is over. So I wanted to focus in these two areas. Thank you. And thank you. Very good. Very good. No, you have touched up to the very college level, and rightly said that the primary school is the basic place where morality should be inculcated. But now question comes when we enter to the society, when we intermix with others, there the value of morality is still again there. I request somebody else, kindly raise hands, and there are a lot of things to discuss. And how to inculcate or create moralists are the subject basically. Vimran Dada, can I request you to anyway? Govardhan Dada want to say something. Sorry. Okay. Govardhan ji, please. Namaskar, Dada. Dada, am I audible, Dada? Yeah, very much. Thank you. Yeah. Dada, recently in 2021, in US, one survey was conducted. So 47% of the US people, they agreed that the moral values in US are very poor. Just 16% of them were satisfactory. So even in our country also, people oftenly they lament that there is fast moral degeneration in our society in different forms. So be it corruption, social injustice, fraud, discrimination, mass shootings, adultery, etc. So in our Anandamarga and even in our PROUT, the role of morality, every one of us know very well. So our basic tenet says that without Yama and Niyama, sadhana is an impossibility. Yama and Niyama are nothing but moral principles. Similarly, we say that morality is the base, sadhana is the means, and the life divine is the goal. And again, we say that moralists of the world unite. And Sadvipras we define as the spiritual revolutionaries who are ready to fight against all sorts of immorality by strictly adhering to the principles of Yama and Niyama. And Baba defines society as the collective body of those who have engaged to bridge the gap between the first expression of morality and universal humanism. Means first expression of humanity, moralism to universal humanism. To bridge that gap, you have to take the help of spirituality. So what is morality? Kshemarde Nayanam Ityarde Niti. So in Sanskrit, morality is called as Niti. Niti means Kshemarde Nayanam Ityarde Niti. That is that which leads us towards the supreme fulfillment is called Niti. So this Niti or the code of conduct that leads human beings to the highest fulfillment, so which we call as morality. It is in two types. One is simple morality, another is spiritual morality. So according to Baba says that
till Mahabharata age, the moral principles were very good, but they were in the simple morality form. Right? Because whatever I have seen, whatever I have listened, that they would tell as it is. So without actually adhering to the this satya, they would simply they would stick to that moral value. So in Mahabharata, Baba said even this is also good quality. It's not a bad quality, but spirituality also should be added to it when when a certain situation arises. So similarly, in our individual life, there is a morality, and in our collective life is also morality. If the collective society, suppose because of the pathetic socio-economic conditions, some may be tempted to do some crime out of compulsions. So that's why it is not enough that individual morality is established in the society. Apart from it, so proper socio-economic conditions also must be prevalent in the society. So the causes of the moral degeneration, according to me, I have listed some points. So in our present day education, there are no moral no values are there, because mostly we teachers emphasize the goal oriented approach. You have to bring the rank, you have to score A grade, all these things we will tell. And too much of consumerism is there in our education. If you are selected to IIT, 1 crore package you will get, 40 lakhs package you will get, that we talk. So people will be generally they will become too much they develop the too much consumer outlook. And cultural degeneration also will lead to the moral degeneration, whether it is a TV, electronic media, or print media, whatever it may be. So cultural degeneration is taking place, that is ultimately leading to the moral degeneration. And the poor socio-economic conditions is another reason. The rest of the things I'll speak in the solution. Thank you. Very nice. You have, Rajendra ji, please continue. Yeah. Thank you, Dada. We don't see Surendra ji. Surendra Reddy is absent today. He is there. I saw him. It's not appearing somewhere. Okay, move on. Please move on. So Okay. anybody, please want to say something? Because I have to say one very small thing, that when we were in schools, primary schools, we used to have a prayer, and that prayer was such that it itself was injecting morality in us. तुम शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए. These kind of things were really, unknowingly child is acquiring moral lessons. So anyway, who is B2? Yeah, B2 ji boliye. Thank you. Unmute your mouth. जी दादा नमस्कार. नमस्कार. दादा माफी चाहूंगा, थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश में. हिंदी में बोलिए, you are welcome. नहीं, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिनको जो लैंग्वेज सुटेबल है बोलिए. जी दादा, थैंक यू. दादा आज जो मैंने इसका टॉपिक पढ़ा तो मुझे पता चला कि नैतिकता पे बात हो रही है, इसलिए मैं जुड़ गया. हालांकि मैं तो आप लोगों का फोरम हमेशा जुड़ता हूं और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं. तो आज दादाजी जो नैतिकता है, बाबा ने तो सिंपल दे ही दिया है, नैतिकवान बनने के लिए हम लोगों को यम नियम. लेकिन आज क्या है कि आज हम कितना भी कुछ कर लें, आज समाज में जो है, मान के चलिए कि आज समाज में प्रौत की व्यवस्था हम लोग कर भी देते हैं, लेकिन नैतिकता अगर नहीं होगी तो वो प्रौत की व्यवस्था भी फेल हो जाएगी, है ना. क्योंकि प्रौत भी अगर व्यवस्थित तरीके से है तो उसको भी चलाने के लिए नैतिकवानों की जरूरत है. अगर नैतिकवान नहीं होंगे तो प्रौत व्यवस्था भी फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी चोरी चमारी घुस जाएगा. मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि मनुष्य के भीतर मानवीय गुण है या नहीं है. क्या उसमें दया है, करुणा है, भाव है, लोगों के प्रति प्रेम है, ये सब है कि नहीं है. और ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति होने से मन जो है धीरे धीरे परमात्मा की ओर जब बढ़ता है, तो जब जो है मन का एक्सपेंशन होता है, तब जो है कि ये सब मानवीय गुण लोगों में जीव के अंदर घुसना शुरू होता है. तो ये फर्स्ट चीज हो गई कि हम हर इंसान के अंदर मानवीय गुण है कि नहीं है. क्योंकि यम नियम में अगर हम देखते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान,
तो हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें कि आप जो है कि जैसे कि संतोष आपको करना है। आपके पास करोड़ रुपए हैं लेकिन आप उतना ही लेंगे जितना जिससे कि आपका जीवन चल सके। अन्य चीजों को आप जो है कि इग्नोर करेंगे, है ना। संतोष रखना है, अपरिग्रह भी इसी में ऐसा ही इसका कुछ डिफिनेशन। तो कहीं ना कहीं अगर लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपने विषय में सोच रहे हैं, उनके अंदर मानवीय गुण नहीं है, उनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ये थ्योरी, अगर आप यम नियम का थ्योरी भी सामने रख देंगे, वो सुबह से हम पढ़ के भी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक विचार नहीं है। तो मेरा यही कहने का मतलब है दादाजी कि और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में चीज को महसूस किया दादाजी। आज जो है कि एक से एक स्कूल कॉलेज है, एक से एक पढ़ाई है, डिग्रियां हो रही हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं, हर आपका पेरेंट्स भी बोलते हैं, आपके हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, नैतिकता को पालन करना है, समाज को स्ट्रांग करना है, नेशन का सेंटिमेंट लेकर के देश को स्ट्रांग करना है, इसलिए हम लोगों को देश की रक्षा करनी है, हम लोगों को मिलजुल के चलना है, बहुत तरह की बातें हम लोगों को सिखाई जाती हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में क्या महसूस किया दादाजी, कि जब तक परम पुरुष की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी जीव जो है कि आध्यात्मिक प्रगति पर भी नहीं चल सकता है, और ना ही उस पर जो है कि अहेतु की कृपा होगी। तो ये मैंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी है, उनकी कृपा की साथ बहुत जरूरी है। और देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से, और कोशिश करते भी रहेंगे कि समाज को अच्छी दिशा में लेके जाना है, ये हमारा परम कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन मेरे ख्याल से वो दौर अभी नहीं आया है जहां पर सद्विप्रो का निर्माण हो, और जो है कि नैतिकवान लोगों की लोग पनप पाए, क्योंकि ऐसा दौर अभी नहीं है। और वैसा दौर लाएंगे भी तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ही लेकर के आएंगे। अब वो दौर कब आएगा, या आ चुका है, या चल रहा है, प्रक्रिया में है, ये सिर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी जानते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर इसमें कुछ एड ऑन करना है तो जितना ज्यादा हो सके बाबा नाम केवलम कीर्तन का जाप करने से जो है कि हम लोग जो है कि माहौल को सुंदर बना सकते हैं, एक पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का निर्माण कर सकते हैं। जिस पॉजिटिव हम लोग जो है, आप एक आदमी को बोलिएगा, दो आदमी को बोलिएगा, चार आदमी को बोलिएगा कि सुधर जाओ बाबू, नैतिकता को पालन करो। We have understood your points. Thank you. जी दादा, I appreciate your concern, but you must be knowing, you are a proudist, that PROUT will be managed by Sadvipras only. So unless there are moralists, it is bound to fail. So today you are not prepared. We are not prepared. That is the truth. Anyway, आज के दुनिया की जहां तक बात कर रहे हैं, तो it is a materialism. Is a materialism functions by imposing social pressure on the people to enjoy material objects and accept that as the only mode of operation, and that is what they are playing today, and people are in that dilemma. I mean, in that stage. Thus, in materialistic countries or society, people look at one another with suspicion and act according to the information given by intelligence agencies, and in the absence of spiritual ideas, firmness of morality cannot be established. You rightly said, even if you are a moral person, but if you want to always to be moral, there has to be a support of spirituality. Then only it is possible. And the apparent morality जो आज समाज में दिखती है in a materialistic society is nothing but an immoral alliance to protect their self-interests. So today, even across the coffee table, people are looking very nice to each other. He must be a very good person, but the fact is they are in the self-interest respecting each other. Whereas morality is something different that somebody will talk. Okay, thank you. Anybody else, please? Please raise your hands. आचार्य दिलीप जी। दिलीप दादा। यस, यस, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए आचार्य जी। दादा, ये विषय तो बहुत स्पष्ट है, और इतना जो अभी तक कहा गया है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐड किया जाए। अभी जो नैतिकता की जो हमारे यहाँ बातें चल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि नैतिकवान लोग हैं नहीं,
यस, ऐसा नहीं है कि केवल अनमार्गी होने से ही आदमी नैतिकवान हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझने की बात है। जब हमारा एक नारा है, विश्व के नैतिकवादियों एक हो, इसका मतलब और नैतिकवादी हैं, इसलिए हम ये नारा लगा रहे हैं कि विश्व के नैतिकवादियों एक हो। अभी प्रश्न ये है कि हमारे अंदर वो प्रयास नहीं है कि हम उन नैतिकवादियों की पहचान करके उनको एक रास्ते पर एक संगठन के रूप में खड़ा कर पाए। और यही एक आज की आवश्यकता है, और यही प्रोउट का काम है, यूपीआईएफ का काम है, जिस फोरम पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके लिए कि हम लोग कुछ कह सकें कि हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। अभी तो हम लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, अब 10-20 लोग बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चर्चा यूनिवर्सिटी में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के लोगों के बीच में होती है, फिर वो फॉलो अप नहीं होता हमारा। हमारा ऐसा कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है जिसके तहत हम फॉलो अप कर सकें। तो ये सब थोड़ी बातें हैं। और जहाँ तक नैतिकता का प्रश्न है, हम सभी को नैतिकवान होना चाहिए। और नैतिकवान होने के लिए एक नैतिकवान की जो मानसिक स्थिति है, ये बहुत ऊंची स्थिति है, और उस स्थिति को में आने के लिए आदमी को साधना की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। बिना साधना के, बिना भक्ति के उस नैतिकवान का जो लेवल जिसके हम कह रहे हैं, बाबा बोलते हैं ना, जो आदमी मान लीजिए 10 रुपए की घूस नहीं लेता, 1000 रुपए की घूस नहीं लेता, 1 करोड़ की घूस होगा तो ले लेगा। तो अब उसका जो स्टैंडर्ड है, 10 रुपए का है, 1000 रुपए का है, या 1 लाख का है, क्या स्टैंडर्ड है घूस लेने का, उस पर डिपेंड कर। तो अच्छे से अच्छे लोग आज तो हम दुनिया में देख रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, हम बिजनेसमैन की बात नहीं करते, उनके अंदर वो मॉरलिटी नाम की चीज नहीं है, वो है ही नहीं, क्योंकि जहां बहुत पैसा होगा वहां मॉरलिटी कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ तक कि जो राजनेता हमारे हैं, कोई मॉरलिटी के नाम की चीज नहीं उनके अंदर। उनको हुक एंड क्रुक इलेक्शन जीतना है, काम कुछ भी किया हो उस पर उनको चर्चा नहीं करनी है। ये मॉरल ऊपर से नीचे तक सारी व्यवस्था हो गई है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग खुद भी नैतिकवान बनने की कोशिश करें, और दूसरों को भी इस रास्ते पर लेकर के आए, जिससे कि एक अच्छा समाज बन सके। यही मेरा कहना है। Absolutely. Thank you, Dada. You rightly said there are good people around the world. I mean, personally, our experience was that, especially I visited West Germany and Switzerland, the people of those countries are quite advanced, both in their sense of morality and in their social consciousness also. Right. It is quite nice to see. I mean, that is why Baba says the moralists of the world unite, unite. You rightly said that. Thank you very much, sir. Yes. Anybody else, please? सवाल ये उठ रहा है, the question arises here कि morality is not in our school curriculum anymore. Right. Morality is not in any of the ideologies of any political parties. And these are the two major movers of a society: education and politics. None of these, neither politicians, neither political ideologies, nor the educationists, they are least bothered about talking about morality, or even including morality as a common, basic requirement for becoming a leader. So if this is the condition, on the other hand, we see, society is degenerating, disintegrating. Can you imagine so much money is going to Switzerland? So much money is going to Switzerland. You will not imagine how much money is going to Switzerland. And this amount has become doubled in this period. The statistics are there. And when the statistics have been presented, that how much increase has happened, nobody has given
a counter statement from the government side that this is a wrong information. So what is happening here? Why these kind of things are happening? Nobody is now trusting a government. Nobody is having any trust in any government offices. Nobody trusts anyone. What has happened to India? Where do we stand? Where do we stand? So Rajendraji, when you said that morality is at its lowest ebb in our society today, very correct. Yes, इससे नीचे हो ही नहीं सकता है, इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते हैं. लेकिन अगर दूसरे साइड जैसे बिट्टू जी कह रहे हैं, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक बाबा नाम केवलम नहीं करेगा तब तक मॉरलिटी आएगी नहीं. ये इनका एक्सपीरियंस है और he has a right to claim that because he had seen, इन्होंने देखा है अपनी आंखों के सामने कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन मॉरलिस्ट कट्टर में एक्चुअली वही बन पा रहे हैं जो साधना कर रहे हैं या जिनके पास यम नियम का फॉर्मूला है या जिनके पास 16 पॉइंटर है जो बने हुए हैं. तो डिफरेंट लेवल ऑफ मॉरलिटी का एक स्टैंडर्ड हो रहा है जहां मैं समझ रहा हूँ. इस्लामिक कंट्रीज में आप देखिए, अभी अपने देश की बात आप देखिए. Haranand ji had presented very nicely the biopsychology of morality and very nice. And others have also presented very good. Now let us go into the ground level reality. If you think of a Muslim child, every Muslim child must go to madrasa where they learn from Quran Sharif. Every child, Christian child, must go to their Bible classes. They are all educated in missionary schools, and everybody learns what the Bible is telling, what is right, what is wrong, what is right, what is wrong, what is right, what is everything is being taught. When we were young students, we had to go into the prayer, like Rajendra ji said in the opening. Yes, I remember. And those values were so high, they were pushing us so high for the whole day that our classroom, we were so active that yes, we have a mission in our life. Yes, we have to do something. We have to become something. I mean, those things have been systematically removed on purpose. It has been removed. There have been political pressures on educationists to remove those classes. We had Sanskrit, optional language, and there used to be Niti Shlokas. In Hindi vernacular, there used to be, such stories which were giving us the morals, no more, no use of these things. So India has been dismantling itself. इंडिया अपने आप को डिसइंटीग्रेट करने के रास्ते पर नोइंगली जा रहा है. हमारे लीडर लोग इसको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मोरालिटी की चर्चा करने वाला आदमी आज मूर्ख बोला जा रहा है. आज हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि हम मोरालिटी करने जो बात करता है ये पुराने जमाने के लोग हैं, आज के जमाने में इनका कोई जरूरत नहीं है. तो अमेरिका में जैसे अभी गौड़ जी ने कहा, गोवर्धन गौड़ ने रखा कि अमेरिका में सर्वे हुआ, उन्होंने कहा कि मोरालिटी के बारे में ये पोजीशन है उनका, वी आर द वर्स्ट इन मोरालिटी. इंडिया तो उससे भी खराब हो चुका है. सो द इशू इज कि I mean, what is the role of a movement like Anand Marg? I mean, what one has to do? If Anand Marga has to have a social value, yes or not? If Anand Marga has to have a social value, if Anand Marga has to justify itself that it is a very much required movement in society, then what is that one factor that Anand Marga can bring to the society? Can we bring morality to society? Can we introduce morality to society? Can we tell to the society that, hey, wait a minute, we have everything, but we also need morality, and here we want to say something about it. Hey, leaders, oh, educationists, oh, school teachers, principals, please include morality. Can we go around and talk about it in the schools and colleges? Or we will just keep talking amongst ourselves? Surendra Reddy ji, please.
Namaskar to all the participants, and have been listening to all the members before me very carefully, and their contribution is really very good in this respect. But somehow I also am trying to maybe going into quite a heavy presentation. So, what Baba says that where does the morality begin? Where animality ends, humanity begins. Where humanity ends, divinity begins. The meeting point of the highest attainment of humanity. The meeting point of the highest humanity, highest attainment of humanity, and the blossoming of divinity. So intersection. When you are in the what you call your humanism has or rather developed very well, and you are on the path of spiritual growth. So there is a blossoming of divinity is the base on which the cardinal human principles are established. Okay. So now we know the source of moralism, one point. Then going to historically, moral development is not an isolated affair. It is not something purely individual, but an aggregate of human existential, civil, and cultural developments. Therefore, for the all-round development of the world, society and its citizens, a morality that embraces all living beings and not only secures the interests of a few persons or groups is required. It is not sectional. It has to be universal. Okay, now coming to the systems of, now there is a very interesting dimension has been given by one author by name Prabhakar or Overland Prabhakar. I do not know what is his what is his name? Prabhakar T. Overland. So he has been explaining things of the evolution of morality. Then he makes it very clear, our historical perspective. There has been a system of objectivating morality. For example, you have a sense of what, for example, ahimsa, or you have ayama and niyama. The yama and niyama are in some sense, they are little abstract or subjective. And then they get transmitted into certain do's and don'ts. So when they become do's and don'ts, they become the objectivation of your moralism or morality. Several objective moral codes and principles have been developed from antiquity. So this has been going on through the human history. Some examples include ancient India's, Egypt's math. The math is there, and the 10 Commandments of the Old Testament. The math offers numerous examples of moral objectivism. See, you also reduce it to some kind of, say, for example, our 16 points. Our moralist, proud moralist will have to follow the 16 points. So this Shila. So this is objectivating the moralism of Yama and Niyama. See, the confessions of God is math consists of 42 moral observances, such as not being unfaithful, killing, stealing, not used witchcraft against the king. Oh, such things are there in math. Math is a very old objectivated morality kind of stuff. Then, in fact, we come across Buddha, a contemporary of Confucius. He actually was the first or very early to formulate a moralism in a subjective form. Morality, subjective form of morality known as the eightfold path. Okay, I don't want to go into the details of that. He used the term sadhu or those who did to others as they would want others to do to them, and placed that concept in a greater existential perspective. That's what Buddha has done. Then comes principles of yama, externalized control, and another 5 principles called niyama, internalized regulation. So yama and niyama constitute the classical subjectivating morality. So he is saying that it is a continuation of the same concept of subjectivating morality of the spiritual practices that arose in ancient India. Any practitioner of the ancient system of Ashtanga Yoga knows yama and niyama as the first two parts of that eightfold system.
So why a subjective approach is the final thing, but while moving on towards the subjective goal, you must maintain adjustment with the objective world. There is no alternative. And when human society accepts this goal and is ensconced in this supreme idea in the very near future, this will construct a human society on this planet. So why I am mentioning this objectivating and also subjective approach is that, for example, when the tribals like Birsa Munda or Alluri Sitaramarazu from Andhra Pradesh, see, when they fought against the Britishers. So when the Britishers, Britishers had treated them as a kind of people who were against the people, who were disturbing the people, or who were not moral. The rulers were considered as moral, not moral, while the people at the ground level who were fighting for the freedom of India, they were considered as moral. So here, these are what we call the conflict that arises between the subjectivized morality and the objectivation of morality. And the supreme idea, okay. The 10 principles, so now, so I wanted just to contribute these inputs to you in the matter of this thing. So now what happens is that when we are when the struggle and when you're fighting against the anti-exploitation, with the anti-exploitation sentiment, we are moving forward in the Samaj movements, opposing the forces of decadence, opposing the forces of adharma. Then see, all these issues come up when we have to stick to our yama and niyama, which are not about saying you should not say something against the leaders, should not say something against this or that. That's not the point. The point is that the human beings have evolved to a level where they can understand the subjective concept of moralism, and they also have the wisdom to maintain the adjustment with the objective world. There is no alternative. Next. Okay, sir. Thank you, Daga. Thank you very There's much. so many people waiting. Yes. Namaskar. 10 moral principles, that is cardinal moral principles. Thank you very much. Yes, Bharti Raj Didi, please. Yes, Bharti Raj. नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक है कि मोरालिटी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे है। अब क्यों कहा जा रहा है कि मोरालिटी लोएस्ट पॉइंट पे है? बिकॉज जिस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए वो चीज अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, वो प्यूनिटिव हो जाता है मेनी अ टाइम। बेस्ट एग्जांपल इज अशोक खेमका, जो आईएएस ऑफिसर है, वो ऑनेस्टी के लिए काफी अच्छा एक एग्जांपल दिए है सोसाइटी को, और उनका ऑनेस्टी जो है उनको बैकफायर कर रहा है। उनका अभी तक कुछ 30 ट्रांसफर हो चुका है। दैट मीन्स कि जहां मोरालिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए वहां पे वो चीज प्यूनिटिव हो गया है। तो अब हम आते हैं कि हाउ टू क्रिएट मॉरलिस्ट। अब इसको हम लोग रिवर्स बैक कैसे करना है? तो कैरेट और स्टिक वाला जो पॉलिसी है, जहां ऑनेस्टी को कैरेट मिलना चाहिए वहां ऑनेस्टी को स्टिक मिल रहा है, तो अब हम कैसे ऑनेस्टी को कैरेट दें? इसके लिए सबसे पहले जो है हमें मॉरल साइंस, जो कि एजुकेशन से हट गया है, उसको वापस लाना होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन में हमें सुधार लाना होगा, मॉरल साइंस सब्जेक्ट को लाना होगा, और वो एग्जामिनेशन सिस्टम में इंक्लूडेड होना चाहिए। अभी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, ये सब, उसमें ये भी रहना चाहिए कि बच्चा कितना ऑनेस्ट है, बच्चे में कितना कोऑपरेटिव फीलिंग है, बच्चा कितना हेल्पफुल है, इन सब का भी इक्वली मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि मोरालिटी को अप्रिशिएट करना है। तो एक तो एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, दूसरा कि हम अवार्ड दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा हेल्प किया किसी का, या बहुत क्लीन रह रहा है, या बहुत डिसिप्लिन रह रहा है, बहुत ऑनेस्टी से कोई चीज का जवाब दिया, उसको हम कुछ नहीं भी तो उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों में, जहां से उसको ये मोरालिटी जो है उसको एक एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव फोर्स मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलना चाहिए।
यस यस देन और जब हम स्कूल से ऊपर उठते हैं, कॉलेज जाते हैं या कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, तो यही ऑनेस्टी उसको प्रमोशन के फॉर्म में मिलना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा ऑनेस्ट है, बहुत वेलफेयर काम किया है, बहुत डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको प्रमोशन भी उस हिसाब से मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, डिसऑनेस्ट जो है वो उसको प्रमोशन मिल जा रहा है, जो ऑनेस्ट है बेचारे को डिमोशन मिल जा रहा है। तो हमारा सिस्टम इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से रूल रेगुलेशन और प्रमोशन सिस्टम होना चाहिए जहां ये मोरालिटी बेस्ड प्रमोशन होना चाहिए, जहां पे एक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी मॉरल वैल्यूज हैं उन सबको कंसिडर करके प्रमोशंस एंड जो भी अवार्ड्स मिलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट हम लोग कि सबसे पहले जो शुरुआत होता है ह्यूमन लाइफ वो घर से होता है, पेरेंट्स से सबसे पहले शुरू होता है। तो पेरेंट्स और टीचर, उनको इनकलकेट करना है ये सारे मॉरल वैल्यूज स्टूडेंट्स को। यहाँ पे अब मैक्सिमम पेरेंट्स और टीचर्स में ही मॉरल डिग्रेडेशन देखा जा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत हम पेरेंट्स और टीचर्स के मॉरल वैल्यूज को बढ़ाने में करेंगे। आज के पेरेंट्स जो है, बच्चा अगर झूठ बोल के आ गया है तो उसको अप्रिशिएट कर, वाह तुम बहुत अच्छा बोले, तुम बहुत समझदार बन गए हो, तुमको समझ आ गया कि कहाँ कैसे चालाकी करके तुम आ गए हो। रादर अगर वो सच ऑनेस्टी से कुछ बोल दे रहा है तो पेरेंट्स ही उसको डांट दे रहे हैं, तुम सच क्यों बोले, इससे तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तुम बेवकूफ हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉरल डिग्रेडेशन जो हो रहा है पेरेंट्स और टीचर्स के लेवल से ही शुरू हो जा रहा है। तो हमें वहां पे रिवर्स बैक की आवश्यकता है। वहां पे हम जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करें या जब टीचर्स ट्रेनिंग होता है उस समय मॉरल, अगेन वहां पे भी जो सिलेक्शन प्रोसेस हो, ट्रेनिंग प्रोसेस हो, उस समय मॉरल वैल्यूज को देख के होना चाहिए। नेक्स्ट, उसी तरह से जो बॉस या सीनियर्स होते हैं ऑफिस में, उनको अपने जूनियर या स्टाफ को मॉरल वैल्यूज जिसके अंदर ज्यादा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट पे कि जो रूल्स है, चाहे वो घर के रूल्स हो या स्कूल के रूल्स हो या रूल्स रेगुलेशन जो कानून है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी हमारा जो जितने भी रूल्स हैं वो सब मॉरल वैल्यूज के बेसिस पे ही बनना चाहिए। उसके बाद जो हम नॉर्मल टॉक्स करते हैं, जो भी नॉर्मल टॉक्स करते हैं बातचीत के दरमियान में देखेंगे, स्पेशली टीनेज एंड ऑल, उसमें हमारा मॉरलिस्ट टॉक्स बहुत कम होता है। जब भी आप कुछ मोरालिटी का बात करिए तो सब आपको कहेगा कि ये सब किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें करो। तो मतलब अगर आप मॉरलिस्ट टॉक कर रहे हैं मतलब इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। तो इस वहां पे हमें हम चेंज ला सकते हैं। हम जब भी बात करें तो हम हमेशा मॉरल वैल्यूज को पकड़ के बात करें। हम जब भी एग्जाम्पल दें तो हम मॉरलिस्ट का एग्जाम्पल दें। आई नो 99 आपके एग्जाम्पल्स निगेटिव हैं, इमोरलिस्ट के हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल तो मॉरलिस्ट का है, हम ढूंढ के उनकी बात करेंगे। मैं खुद अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जब भी हमसे कोई मिलता है, ठीक है मैक्सिमम ऑफिसर्स करप्ट है, लेकिन एक ऑफिसर भी अगर मेरी नजर में है जो अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी एग्जाम्पल देते हैं। थैंक यू हम दीदी, आई थिंक टॉक्स को। नेक्स्ट आते हैं कि हम जो यूट्यूब्स पे भी जो वीडियोस देखते हैं, कोशिश करें कि ऐसे वीडियोस देखें जिससे कि हमारे मॉरल वैल्यूज को वाटरिंग होते रहे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे माइंड में आए। क्योंकि आप जैसा देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, वैसे आपके नेचर बनता है। तो हम YouTube पे भी जो वीडियोस देखें उसमें भी हम कोशिश करें कि जो मॉरल वैल्यूज वाले हैं उनको हम देखें, जो भी लोग मॉरल वैल्यूज को अप्रिशिएट करें वो सारी चीजें दें, वैसे लोगों का देखें जो मॉरल वैल्यूज पे एग्जाम्पल है वो सब देख सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज कि हम साधना, सात्विक फूड, ये सब लेंगे तो नेचुरली जो हमारा बेस होगा वो तैयार हो जाएगा मॉरलिस्ट की तरफ। क्योंकि एक बात आती है, बहुत सारी एकेडमिक चीज होती जा रही है। एक बात ये आती है कि जिस कम्युनिटी को जो बिलोंग करता है वो अपने लेवल में लोगों को मॉरलिस्ट अपने तरीके से बनाते हैं। जैसे इस्लामिक लोग हैं वो अपने तरीके से अपने बच्चों को मॉरलिस्ट बना रहे हैं, क्रिश्चियन लोग अपने तरीके से उनको वो मॉरलिस्ट बना रहे हैं। हिंदू जो कम्युनिटी है इसके यहाँ मॉरलिटी नाम की कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे मैं अभी शुरू में कह रहा था कि हर एक मुस्लिम चाइल्ड को मदरसा जाना ही है, हर एक क्रिश्चियन चाइल्ड को बाइबल पढ़ना ही है, लेकिन हिंदू चाइल्ड को जो सबसे बड़ी मेजर पॉपुलेशन है 85% पॉपुलेशन, कोई मतलब ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या होना नहीं होना चाहिए, क्या बनना उचित है क्या बनना गलत है, क्या भोजन करना चाहिए क्या भोजन नहीं कर, कुछ भी मतलब ही नहीं है। सफाई रखना चाहिए, शौच करना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है।
जब आप 85% पॉपुलेशन को इस ढंग से आप डिमोरलाइज करके रखेंगे, मॉरलिटी के नाम पर उनको जो है डिमोरलाइज करते रहेंगे, ये प्रैक्टिकल बात में आइए ना, एकेडमिक बात में आप क्यों जा रही हैं? सब कुछ समझते हैं इस बात को जो आप बोल रही हैं, हम लोग भी हम इस प्रैक्टिकल पॉइंट को तो इस ओपन सेशन में भी थोड़ा सा समय देना चाहिए। तो हम उस पहलू को जरा देखा जाए कि आखिर हाउ एंड व्हेन दिस प्रोसेस विल बी रिवर्स्ड, कि हमने जो लूज किया है, ये भारतवर्ष रहा है जहां श्री कृष्ण आते हैं, शिव आते हैं, बुद्ध आते हैं, जैन तीर्थंकर महावीर आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं, संत कबीर आते हैं, यहां मोरलिटी की हालत है कि हमको मोरलिटी के बारे में ये सिचुएशन है कि सारी दुनिया हम पर थू थू कर रही है। जो थोड़ी व्यवहारिकता की बात में हम आ गए। हम नहीं कह सकते कि सभी को बाबा केवलम करना पड़ेगा तभी आप मॉरलिस्ट हैं, तो आप मॉरलिस्ट नहीं है, भूल जाइए उस बात को। बहुत सारे बाबा केवलम करने वाले भी मॉरलिस्ट नहीं है, ऑनेस्टी भी नहीं है बहुत सारे लोगों में। इसलिए इस बात को डॉगमा मत बनाइए, व्यवहारिकता तो व्यवहारिकता है। आप मान लीजिए एक आदमी 2 दिन पहले साधना सीख लिया, वो मार्गी बन गए और वो जो मॉरलिस्ट हो गए, ऐसा होता है कहीं क्या? एक महीने से बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्गी बने हुए, तो मॉरलिस्ट आप उनको मान लीजिएगा? ये सब डॉगमा में हम लोग को भी नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ सोशल मॉरलिटी की बात हो रही है, समाज निर्माण की बात हो रही है, सोसाइटी कैसे तैयार होता है। जहां मॉरलिटी नहीं हुआ सोसाइटी कैसे तैयार होगी? Right, Dada, I think we should. चलिए मूव ऑन, देयर आर मोर पीपल। दीपेश्वर प्लीज। या दीदी सॉरी, यू कम नेक्स्ट। दीपेश्वर, हाँ सेकंड राउंड में आइए ना आप लोग फिर से। दीपेश्वर, दीपेश्वर, बहुत से नए लोग हैं, कुछ पर्सपेक्टिव डालेंगे। काफी हाथ उठे हुए हैं। Namaskar everyone. नमस्कार। So basically, I very agree to Acharya Bimlanand Dada, and that my point was like, yeah, somewhat very close to him only. So if we see the like our past, like Eastern philosophy, our Indian culture, so it's more of what we used to like in terms of subjective approach, what many times Dada has referred, and also Surendra Dada has mentioned in between. So it was more of subjective approach, like if we talk about Buddha or I think in Sankaracharya time also, Right. what he referred Brahma Satyam Jagat Mithya. So what it inculcates, very much devoted person, but is still like difficult to adjust with society. As is like if we see contrary to Western philosophy, they are more on objective approach, basically like objective blend on the mind, what we call. So they are like what we see the materialism or consumerism in terms of more of they will more on physical aspect. So, but ours, the Eastern philosophy were more on psychic and spiritual, like in a way to spiritualism. So when the blending, like now the era, this 2020 or 90, when the globalization starts, and this blending is not fitting well to the Hindu society. What so-called if we talk about like mostly affected is Hinduism, that 80% population. So that blending of Eastern and Western is not happening properly. Like people not inculcating that like we are lacking in both. Right. This aspect our preceptor has given, Sri Anand Murthy ji, our Baba has given the ideology of subjective approach and objective adjustment. This can only be solution to the problem to imbibe a morality. Very good point. Yes. So this is Atmokshatam Jagat Hitaya, that we have to introduce, that we have to put forward with rational thoughts and in the newer generation, and then only we can be succeed. Anand Marg has a role to play. Anand Marga has got a role to play. There is no school which is talking both subjective and objective. It's first time that Anand Marga is talking about subjective as well as objective.
Yeah. It's only Anand Marga School of Philosophy that is teaching both are real, and we have to learn how to behave in subjective, what is our goal in subjective, what is our and life in objective, and how to combine the two and lead a successful life. Very good. Next, Gautam Pradhan ji, please. Yeah, no, I'm sorry, Chaitanya ji is there. Chaitanya Dev. is Chaitanya Dev. Yes, Chaitanya ji, please. Thank you. Namaskar, everyone. Namaskar. As I've gone through the topic, it's like the current state of morality is, in a very questionable state, depraving state. And the second objective of the topic is how do we create moralists? So, in my opinion, definitely there must be some sorts of agents involved in this depraving state of morality. They are those people who will benefit from a depraving state of the morality, in the society. And what a person devoid of morality loses courage in himself, and there is a loss of identity. Existential crisis happens in that person, and that to make certain decisions in life, he feels impaired, and he thinks that he's alone, and he's very vulnerable to certain kinds of exploitation, certain kinds of I think certain kinds of decisions made by third parties, where he thinks that yes, this is his life and he has to accept it as his fate. So fatalism happens, and more number of things come into place of those people. So we have to understand, and we have to classify such agents which are actually inculcating immorality in public life, in individual life, and we have to identify them. That is the first step. And secondly, Baba has said that our beloved Guru Shishan Mutiji has stated times and again that it is not only important to be moral by if somebody decides to be be moral, you have to fight against immorality as well. So once we are done identifying, it's our responsibility incumbent upon us to be moral. And for that, we have the beautiful ideology given by our beloved Guru. We can definitely go ahead and read and follow it for ourselves. But at the same time, how do we inculcate morality in the society is through discussions, is through identifying those people who are against morality, and they are trying to mutilate the society as per their own advantage. I think this is a repeated fact. Second fact is then once after identifying those agents, we have to wage a war, an incessant war against them, and that has to be systematic. In the same system as they are affecting the people, we have to try an approach which is 180-degree different. So if they are it's the matter of volumes, as it was stated by one of the esteemed speakers, that we have to look at all the social paradigms, all the social arenas where immorality has been peddled, is being peddled, and there are consumers of such contents these days. Content creations and all these things are really being consumed. So we have to see where this consumption is happening, and we have to inculcate proper content in the media, so that as much as there is as I've seen that certain dogmatic forums have been trying to peddle their own ideology, let it be faulty or whatever, but their adversaries have been working hard as well. So two dogmas are trying to perpetrate their ideologies in the social media. And in the beginning, one dogma was on the rise, but then the other part got really startled, and they started doing their work as well. So if propaganda is negative, then we can also do positive propaganda, and we should work accordingly. Like Baba said that if I've heard, I think I'm not I will not misquote him. It is said that if propaganda is like saying 1,000 lies and making it a truth. So why can't we say truth 1,000 times, and it will remain the truth, and our job will get done. Yeah. Right. So this is what I think, and we have to identify. We have to sit down and really do our homework, and we have to identify where all these where are the arenas where we have to fight the immoralists, and we have to unite the moralists. But the thing is, fighting immoralists, waging a war. I have heard also in the previous talk, previous open forum, we have to wage a war. But wage a war
There's No, so see, many, Dada, there's so what I many, meant, no, I have to make a statement. There's so yes, many ways of waging a war. that is what I meant, sir. Intellectual revolution, intellectual, renaissance is also a kind of a war. Absolutely. A Shudra fights in a different way. A Kshatriya Absolutely. will fight differently. Intellectuals will fight differently, and the Vaishyan people will fight differently. And Sadvipras will fight differently also. Absolutely. A Sadvipra will not fight or do the war in the same manner as a Kshatriya is doing, or Vipra is doing, or Vaishya is doing, or Shudra is doing. So that is also an art. And Baba is indicating renaissance in all aspects of life, all spheres of life. Renaissance in all spheres. This is a call for a war of its own kind, intellectual fight, intellectual renaissance. That is what is required. And our magazines and our open forums are the tools for creating, accelerating those things, to stimulate the right seeds to germinate in the mind of the people, give them the courage to speak, express themselves. People are not even expressing. We have 30 people here. Nobody writes an article. And here we talk about waging a war, incessant war. And I mean, what are we doing? We cannot even write an article in 30 days' time, and we are fighting a war. Wait a minute, that's please. okay. Wait a minute, please. Okay, next, Chatura, please. Dada, I will just say a little more. Okay, please complete it. Yes. See, the thing is, Dada, there are a number of types of sevas, right? So there are Viprochit seva, Shudrochit seva, and Baba has said that all of the sevas are, I mean, whenever it is about the utility, right? So if we do Viprochit seva, when we need to do Shudrochit seva, that is not, I mean, that's anachronistic, I think. So yeah, whenever we need to do whatever kind of seva, we should be able to do it. And waging a war does not mean that I am pointing towards, arms and right. So I think, yeah, I mean, that was exactly the same as Dada has pointed out. Right. So, absolutely, whatever seva we want to do at the times that we can, we should be ready to do. And Baba has said that intellectual service is the highest form of service. It is definitely, but you cannot do intellectual service when you need to feed somebody, right? Absolutely, absolutely. But always there will be intellectuals in society, and we should reach there. There is short of time, and there are 5 hands are still raised. Okay, Chatura, please. Chatura. Namaskar, Dada. Namaskar to all participants. Yes. So when we speaking about this topic that morality has gone low, I see in a different way when it comes to the context of India, because when we got independence and it was not in a true sense, and majority of our people were poor. So like even after the independence, like the people who were working in government sector or private jobs, they were not getting enough salary to lead their life. And when India was opened up for this global market in 1992, and then was a time wherein people started seeing the money to come, or having a good job, or having more salaries, because what I see is 80 or more than 85% of India were not having any have their own house, or basic needs were not there. So there was the education system was not good, that I agree. But what happened was the focus turned for a better living. All the parents wanted their children to learn English language in a proper way, or learn computer knowledge, so that they get a job, or they can, because now also people or parents put a benchmark, or they give examples of people who have settled in outside countries because they are living a better life. But this transition is like, we are in a transition time wherein we were not having Indians were not having the basic needs. Now what I see is people who are already have their own house, they don't force their children, because I see in the new generation also people who are 10 or 15 years younger to me, their focus is on the finer things of life. If they are in a vegetarian, non-vegetarian, born in non-vegetarian, they themselves quit, they are becoming vegans. I'm not telling that vegan is proper, but I'm just telling that
as the Indians, prana dharma is spirituality. Nobody can stop it. I know it is. It's just a time wherein we were not having the basic needs, and we had that the focus was turned for having a better lifestyle or better living. So when that is gained, then we automatically the morality will come back. That is what I feel. Thank you. Thank you, Dada. Rishi, the multilateral, what is the name? Who is this Rishi? You want to talk? Okay, Gautam Pradhan ji, please raise. नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार टू ऑल पार्टिसिपेंट। मैं हिंदी में बोलूंगा दादा अपनी बातों को रखने के लिए। अभी दादा ये जो मोरलिटी पे क्लास अभी मतलब थोड़ा जोर से बोलिए दादा, आपका आवाज धीरे आ रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। दादा अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा था दादा, नमस्कार सभी दादा को, दीदी को। इसमें कुछ चीजें मोरलिटी पे बोल रहा था, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। दादा अभी एक बोले कि सोशल मोरलिटी पे बात करें, बिमलान दादा जी ने बोला। तो कहने का मतलब अगर सोशल मोरलिटी की बात की तो एथनिक मोरलिटी का और दूसरा टाइप भी है, उसको हम दूसरा चीज से जोड़ सकते हैं, सोशल मोरलिटी और स्पिरिचुअल मोरलिटी। अगर इंडिया में देखेंगे तो स्पिरिचुअल मोरलिटी हो सकता है दिख जाता है, पर ओवरसीज कंट्रीज में देखेंगे तो सोशल मोरलिटी दिखती है। तो चीज को एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। एक छोटा सा चीज, अगर बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी गाड़ी को उनके परिवार वालों ने ले गया व्यक्तिगत यूज के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस पूरे गाड़ी का किराया, जो भी उनका जो पैसा बनता था, उन्होंने उसको सरकारी खजाने में जमा किया। आज देखेंगे तो आज ऐसा कौन करता है? तो यहाँ जब मोरलिटी की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले हमें खुद को प्रस्तुत होना पड़ेगा। जैसे बाबा ने कहा कहते हैं एग्जाम्पल बिफोर गिवन ऑर्डर। अगर हम मोरलिटी की बात करें तो ये देखना पड़ेगा हम कितने मोरल, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखें। और एक बात दादा ने और भी कहा कि केवल आनंद मार्गी ही मोरलिस्ट हो ये जरूरी नहीं, पर आनंद मार्ग वाले मोरलिस्ट हो ये तो कोशिश करें। और मोरलिस्ट तो कोई भी हो सकता है, पर जैसे बाबा ने चीज कहा, एक एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको उन्हीं के बारे में बोला। हाँ, जिनके लिए सेकंड टर्म पूरी पब्लिक, इंडिया की 60% पब्लिक बोली कि ही शुड गेट अ सेकंड टर्म प्रेसिडेंसी, एंड द पॉलिटिशियन सेड दैट ही डज नॉट नो पॉलिटिक्स, सो ही शुड नॉट हैव द सेकंड। Just because of that, he was a very honest moralist. But he was not doing Bhavanam Kevalam, okay? He was not doing Bhavanam Kevalam. That's why I want to say कि केवल आनंद मार्गी ही मोरलिस्ट हो ये मतलब जरूरी नहीं है, दूसरे भी मोरलिस्ट होंगे। बट बाबा ने एक लाइन और जोड़ा हुआ है, मोरलिटी इज द बेस, साधना इज द वे एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। मीन्स हमको अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। केवल मोरलिस्ट होंगे तो ये चीज में, क्योंकि मोरलिस्ट हमेशा मोरलिस्ट क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीजन है कि उसका लाइफ का गोल क्या है। अगर स्पिरिचुअलिटी को, लाइफ डिवाइन को अगर अपना गोल बना के रखता है, साधना प्रैक्टिस करता है, तो मोरलिटी की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और जैसे आपने भी बताया था पिछले क्लास में कि जो प्राउट व्यवस्था आएगी तो प्राउट का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? सदुत्तर के हाथ में रहेगा। सदुत्तर के हाथ में कंसिस्टेंसी रहेगी क्या? वो बदलते रहेंगे या जो भी मतलब वो आएंगे वो एक आदमी के सदुत्तर नहीं रहेगा, एक बोर्ड होगी मतलब वो हम एक दूसरे को देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मीन्स उनको भी नजर करने के लिए कोई है। तो और दूसरा चीज, एक चीज आपने एक बार और भी बताया गया था कि अभी आपने उदाहरण दिया कि गौतम बुद्ध के देश में और ये नानक के देश में, इतने लोगों के देश में आज मोरलिटी की आज दुर्दशा क्यों? इसके पीछे एक रीजन और भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हिडन फैक्टर है कि भारतवर्ष की क्या मजबूरी, अध्यात्म बिना शिक्षा अधूरी। आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया है? आज केवल नौकरी करने वाले लोग पैदा कर रहे हैं। आज मोरलिटी का क्लास नहीं हो रहा है, लोग अपने परिवार में घर में से वो चीज नहीं निकल रहा है। जैसे घर में भी है तो बांट के खाना, अगर पड़ोस में बांट के खाना, ये चीजें धीरे धीरे आते जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा ने बताया, उन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे और ये चीजें स्कूल में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, परिवार में हो, घर में हो, सब जगह हो, तब जाकर के हम उसको स्टेप अप कर पाएंगे। और केवल फिलोसफी से कुछ नहीं। अभी एक दादा ने भी बोला कि सब्जेक्टिव अप्रोच टू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, तो ये चीजें का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। यस, गीता दीदी प्लीज। गीता दीदी। नमस्कार दादा। नमस्कार दीदी। आज का जो विषय है ये हम दादा की क्लासेस में भी हुई हैं इसके ऊपर कई बारी, और हमने कई बार डिस्कस भी किया है नैतिकता के ऊपर। तो जैसा कि दादा की क्लासेस से हमने सीखा था कि
किसी भी देश या समाज में तीन तरह की चीजें हैं, तीन तरह की चीजों से वो बनता है, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक एंड आर्थिक। तो जो आज अगर हम देखें तो जो आर्थिक स्थिति जब तक किसी व्यक्ति की अच्छी नहीं है और उसकी घर में आज एक समृद्धि का नहीं है एक सिद्धांत, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी और वो इंसान की नैतिकता हमेशा ही डगमगाएगी। और वो चाहकर भी अच्छा इंसान बनना चाहे भी तो भी वो कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। तो इसलिए लेकिन जब तक हमारा ये जो व्यवस्था है, राजनीतिक दलदल की जो व्यवस्था है ये रहेगी, तो तब तक ये प्रॉब्लम तो रहनी ही है। क्योंकि नो डाउट कि आनंद मार्ग के पास मॉरलिस्ट बनाने का बहुत अच्छे फॉर्मूले बाबा ने दिए हैं, बहुत अच्छा सिद्धांत है। लेकिन जो आज की इस व्यवस्था की स्थिति है, जब तक ये व्यवस्था कायम रहेगी, इस व्यवस्था के अंदर लोग परेशान होते रहेंगे, तब तक मॉरलिस्ट बहुत कम लोग बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज की लोग मॉरलिस्ट बनना नहीं चाहते या है नहीं। बहुत से ऐसे गांव हैं, आज पीछे ही न्यूज में मैं देख रही थी कि एक गुजरात में अभी इलेक्शन होने हैं, वहीं में एक ऐसा गांव है जहां पे इलेक्शन कभी होते ही नहीं है। उनसे वहां के जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान था उससे इंटरव्यू ले रहे थे एक जर्नलिस्ट की, क्यों नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी तो वो इस गांव का माहौल खराब कर देगी, और हम अपनी संस्कृति को और सभ्यता को बचा कर रखना चाहते हैं, और हम यहाँ पर नहीं कभी होने देंगे, इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। तो अगर ऐसा संकल्प हर पूरे देश में अगर होता है तो मैं समझती हूँ मॉरलिस्ट बहुत जल्दी तैयार होंगे और आनंद मार्ग के पास जितने फॉर्मूलाज एंड सिद्धांत हैं ये वर्क करेंगे तभी। और इसके अलावा जो आज व्यवस्था आप जानते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, इसके घरों में जो पूंजीवादी लोगों के घरों में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी गांव है जहां पर खाने को नहीं है, लोगों के खाने के बगैर मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था दोषी है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति वहीं होती है जहाँ सभ्यता होती है, और सभ्यता जहाँ है वहाँ परिवार है, समाज है, और परिवार में सबसे पहला स्कूल किसी व्यक्ति का उसकी माँ होती है। उसकी माँ ही सबसे पहली गुरु है और घर ही उसका स्कूल है। तो यदि वहीं से ही बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे और अगर परिवार में अच्छे इस तरह के संस्कारी लोग होंगे, तभी वो बच्चा आगे बढ़कर उसके अपने घर से ही मॉरलिटी की उसकी शुरुआत हो जाएगी। राइट। अगर वो स्कूल जाता है, स्कूल में भी जब शिक्षा व्यवस्था ही इस तरह की होगी, उसकी किताबों में दादा दादी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना जगाई जाएगी। आजकल की हम सुनने में आते, पीछे कुमार विश्वास का भी जो एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने भी एक कविता पढ़ के सुनाई कि आजकल ये कविता गाई जा रही है। मैं गा तो नहीं सकती वो कविता, मुझे याद भी नहीं उसकी पंक्तियां, लेकिन उनका भाव यही था कि वो उसमें दादी को भी इंसल्ट की जा रही थी उस कविता में, बड़ों को कुछ रिस्पेक्ट नहीं जा रही थी, तू ता करके उनको बोला जा रहा था। तो अगर इस तरह के साहित्य बच्चे पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक कि उनके अंदर एक मॉरलिटी नाम की कोई चीज आएगी। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद होने चाहिए। उसके अंदर जो पुरानी चीजें हैं हमारी, जो जहाँ गुरुकुल सिस्टम में जो सिखाई जाती थी, वो यदि आती हैं तो होप्सो की मोरालिटी का कुछ बीज पड़ेंगे। और हाँ बिल्कुल, इस तरह की चीजों से ही मोरालिटी आ सकती है। एंड आर्थिक व्यवस्था में कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही सुधार होने वाला है आने वाले समय में। और उसके अंदर भी बाबा ने फर्स्ट पॉइंट ही नैतिकता के ऊपर जोर दिया। बाबा ने जगह जगह नैतिकता के ऊपर जोर दिया गया है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे कल्चरल व्यवस्था हो। तो यही मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद। ऋषि जी, हु इज दिस ऋषि? काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ऋषि जी अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। कृपया अनम्यूट करिए, बात करिए। यस, बोलिए। हाँ, नमस्कार दादा। नमस्कार। हाँ, मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा विषय पे एक चर्चा रखा है। में अपनी बातें करिए दादा। नहीं, हाँ बोले जी, हाँ चलिए बोलिए सर। ऋषि जी बोलिए। तो
मेरे मन में कुछ आप लोगों से बहुत अलग नहीं विचार है, बस उस चीज को सजाकर एक कहने का वे यही है कि मोरलिटी अगर हम इसके कई जो है परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहला है कि अगर हम एवरेज मैक्सिमम सोसाइटी में मोरलिटी चाहते हैं, मैक्सिमम परसेंट जो ह्यूमन बीइंग है वो अगर मोरल बने, तो नो डाउट कि इसमें अर्थव्यवस्था हमें प्राउट जैसी अर्थव्यवस्था चाहिए ही चाहिए, वरना इस कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम मोरलिटी पॉसिबल नहीं। पहला। दूसरा है कि अब ये तो आएगी, हम प्रयास करेंगे हम लोग, लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों में मोरलिटी नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मिलता है कि दुनिया में जितने ग्रेट पर्सनालिटी जन्म ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम झोपड़ियों में और गरीब लोग के गर्भ से ही जन्म ले रहे हैं। तो यह भी कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें, बाबा 2 लाइन कहीं बोले हैं, मुझे सभी दादा लोगों से ये सुनाई पड़ा कि कमी और वृद्धि जब अधिकता हो जाए बहुत किसी चीज की, इंसान को पद प्रतिष्ठा या पैसा की, या पद प्रतिष्ठा या पैसा की बहुत कमी हो जाए, तो दोनों पाप का कारण बन सकता है। यानी इंसान का जो नीड है वो हर तरीके से उसको पूरा होना चाहिए। यानी कि एक तो ये हुआ कि आर्थिक रूप से सबल बनेंगे, तो दूसरा है इमोशनल रूप से। अगर इंसान इमोशनल रूप से भी दिवालिया हो जाए तो भी वो मोरलिटी को छोड़कर दूसरे रास्ते पे जा सकता है। तो इमोशनल रूप से उसे साउंड, कूल, और सोसाइटी समाज ऐसा हो जो बिल्कुल विरोधी ना हो। जैसे आज कुछ आतंकवादी बन रहे हैं, वो भी अपने माँ बाप भाई बहन के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन समाज के प्रति उनका रवैया क्रूर हो जाता है। तो इन चीजों को समझना होगा। और है व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से इसको कैसे करें। तो व्यक्तिगत भाषण से या शब्दों से ये तो पॉसिबल नहीं, हम सभी जानते हैं। तो कैसे होगा, जैसे छोटे बच्चे से ही हम उसे दान वृत्ति, सेवा वृत्ति सिखाएं। अभी हम देखें सिख में, गुरुद्वारा में छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है कि वो चप्पल जूते को उठाकर उसे पोंछ कर, मैंने एक श्रद्धा लोगों के प्रति दिखाया जाता है गुरुद्वारा में। और उसमें एक चीज और मुझे पॉजिटिव लगा, नैतिक साहस, कि अगर कोई गलत कर रहा है समाज में, कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे अंदर ये नैतिक साहस हो कि हम बोल सके उसे। लेकिन इसकी भारी कमी समाज में दिखती है। अब भारत की हर गलियों में 5 गुंडों का जो है ग्रुप होता है, लेकिन भारत की शायद ही कोई गली होगा जहां 5 अच्छे लोगों का ग्रुप हो और ताकत से, नैतिक साहस से खड़ा हो कि हम गलत नहीं होने देंगे। तो अगर हम समाज में मोरलिस्ट पर्सन को मोटिवेट नहीं करेंगे तो भी डिमोटिवेशन आएगा। लेकिन कुछ अपवादित लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिद पर सारी जो ये थ्योरी है इसको पार करके अपने जीवन में मोरलिटी को बनाए रखते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल अब्दुल कलाम जी हुए। तो मैं यही समझता हूं कि जहां तक हम लोगों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, हम आनंद मार्गियों का, क्योंकि हम लोग इस चीज को कम से कम आभास हुआ है कि हम मोरलिस्ट बनेंगे तभी कुछ इस संसार में परिवर्तन या खुशहाली आएगी। आज भारत में ही 5% लोगों का भी व्यवस्था नहीं किया गया है आजादी के बाद, लेकिन कोई इस गुट में, कोई उस गुट में, कोई इसकी प्रशंसा, कोई उसकी प्रशंसा करने पे है नहीं। हमें सच्चे देशभक्त, जैसे बाबा लिखे हैं, उस तरह से सच्चे देशभक्त की तरह भी ये करना चाहिए कि नहीं, किसी के हम पक्ष में नहीं जाएंगे, जो सच है बस वही बोलेंगे। थैंक यू दादा, धन्यवाद। ठीक है, हो गया। हाँ, अब समय कम है, आपकी बातों को मैं समझ गया। चलिए, समय कम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारस जी, आप 2 शब्द बोलिए। दादाजी, सभी लोग बने रहे, प्लीज बने रहिए, बाकी की भी बात सुन लिया जाए। हाँ, अब मीटिंग खत्म भी करनी है, चलिए आगे बढ़िए। पारस दा बोलिए। सभी को नमस्कार। नमस्कार दादा। दादाजी, ये पॉइंट हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया। अभी हम लोग ये डिस्कस करें कि क्या कैसे बनाएंगे। हमने जो रियलाइज किया है बचपन से ही कि स्वाध्याय, उसमें आनंद मार्ग में हम लोग नहीं थे, बचपन से ही रीडिंग गुड बुक्स जो भी रिकमेंडेड है, रामायण गीता, इधर ये मैट्रिक से आने के पहले ये बहुत हेल्प किया शुरू से ही। ये मोरालिस्ट अपने कैरेक्टर में लाने के लिए
अपने विचार में लाने के लिए, एक बेटर स्टूडेंट बनने के लिए, बेटर समाज में अपना स्टैंड बनाने के लिए। हेंस स्वाध्याय हेल्प्स। बाबा ने अभी कहा है कि स्वाध्याय अपने लाइफ में शुरू से ही रखो। कितने परसेंटेज स्वाध्याय करते हैं? और बाहर में उस पर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एंड सोशल कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर में है। इंडिविजुअल यदि स्वाध्याय बचपन से ही अपने परिवार में हम लगा दें। अब बाबा ने बहुत सारी किताबें हम लोग को दिया, उसमें अवेलेबल नहीं था, उसमें हम लोग रामायण गीता का ही सहारा लेते थे और बचपन से ही कई बार खत्म किया। कुछ खाने के पहले जैसे अभी मेडिसिन जरूरी है, वैसे स्वाध्याय करें। वो एक नियम डाल दे तो हम ऐसा रियलाइज करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग पूरे समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा अभी देखा कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ही नहीं है। वो सुबह नाश्ता किया, खाना पीना खाया, इधर किया उधर किया, स्कूल गया, बहुत सारे लोगों से मिला। उसका रक्षा करने के लिए ओनली द स्वाध्याय कैन हेल्प, ओनली द गुड बुक्स कैन हेल्प, ओनली द गुड। यदि हम लोग साधना करते हैं, स्वाध्याय नहीं रहे तो भी वो उतना नहीं उसको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान का भी बहुत जरूरी है। तो मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करें अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने अगल बगल से ही बहुत कुछ मिलेगा उसको। Thank you. At the end, I would like to hear Racharya and Dilip Dada. हाँ दादा, नहीं मुझे कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना था। मैं एक जस्ट इन्फॉर्म कर रहा था। मैं एक लेख लिख रहा हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर। ये जो भ्रष्टाचार है ये जीवन के सारे क्षेत्रों में है। उसमें जो सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, हमारे धार्मिक क्षेत्र है, तो ये जो नैतिकता का अभाव ही भ्रष्टाचार है। तो उसके ऊपर हमारा एक लेख है, हम लिख चुके हैं, थोड़ा उसको फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो वो हम भेजेंगे प्राउट नाउ में डालने के लिए। तो मैं दादा को इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि वो बोलता है कुछ लोग लिखते नहीं है। तुमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोग नहीं लिखते। नहीं मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा कुछ लोग नहीं लिखते। जी दादा, नहीं समझ गया। नहीं मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा था कि वो जो भ्रष्टाचार जो मेरा विषय है उसमें हमने सारे जीवन के आयाम को लेकर के हम चल रहे हैं। क्योंकि वो जो धर्म है, सो कॉल्ड धर्म, इसमें भी भ्रष्टाचार है, समाज में है, राजनीति में है, सारी व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका एक मूल कारण है नैतिकता का अभाव। Yes. Thank you, Dada. Very good. Thank you very much. I think we should conclude, Dada. Yes, conclude. I'll conclude in one line that following the path of morality, human beings will have to move forward towards liberation with perseverance and rationality, and there is no other way. So we have to follow the moral principles. If we want to see others, we have to first follow ourselves. Thank you very much, and let us do a minute of meditation before. एक मिनट मेडिटेशन कर ले और बाबा का ध्यान करके हम लोग। We have so many takeaways from this meeting, and let's consolidate and do sadhana and work it out. परमपिता बाबा की जय। Thank you, Dadaji. Thank you all for joining, and we meet again next Saturday. And you may suggest some topics also. You're all welcome. And everybody is supposed to write some articles. Same topic पर 2, 3, 5 आर्टिकल भी छप सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। There are different takes on the topic. जैसे दादा हरानंद जी बता रहे थे, कितना अच्छे ढंग से इन्होंने बिल्डअप किया सारी चीजों को। बहुत सारे हैं एजुकेशनिस्ट लोग हैं, वो भी बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया। तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। हमारी इस मीटिंग में 2 मिनट 5 मिनट टाइम मिलता है। अगर आप लिखेंगे तो 3 दिन लिखिए और लिख करके 10 पेज का 5 पेज का आर्टिकल बनाइए, बड़ी अच्छी बात है। किताब लिखिए इसके ऊपर में, बड़ी अच्छी बात है। सो वी शुड बी डूइंग दैट। नमस्कार। Thank you, Dada. Thank you very much. Thank you, everyone. Namaskar.